Saloni Maurya di, it's a beautiful Monday morning and welcome to the Harshit Luthra show. So how's you feeling? Thank you so much, Harshit. And yeah, it's a Monday morning, not as dreadful as I imagined because of pretty much this podcast we are going to record. So excited to share my journey. Thank you so much for having me. Thank you so much for coming. And my viewers will know about you, like who is Saloni Maurya. So like, वहीं से start करते हैं. Sure, वहीं से start करते हैं. Saloni Maurya, she is today a personal branding and marketing consultant. And 2 years back, she was an engineering student, pretty Oh. much lost, what not. Yeah, what she wants to do in her life, like pretty much like any most of the engineering kids because they never chose engineering in the first place. So yeah, but yeah, so she is just someone who loves to learn, loves to tell stories, read, and a sucker for nature. Yeah. तो लाइक वही आपकी इंजीनियरिंग लाइफ से स्टार्ट करना चाहता हूँ कि लाइक इंजीनियरिंग व्हाई यू चूजिंग इंजीनियरिंग एंड देन आफ्टर पर्सनल मतलब पर्सनल ब्रांडिंग आफ्टर इंजीनियरिंग तो लाइक तो जर्नी कुछ ऐसी रही थी. मेरा केमिकल इंजीनियरिंग किया है मैंने और मेरा स्पेशलाइजेशन पॉलीमर्स था, तो पॉलीमर साइंस प्लास्टिक टेक्नोलॉजी. सो नॉट अ वेरी नीच्ड field in India. Very few people you will find. And yeah, so somehow I started studying that, and then I had few stints in, of course, engineering. So like research, I did research at IIT Guwahati and learned about stuff. That was fine, but it was not like I want to do it for the rest of my life. Then I interned with ExxonMobil petrochemical company, and then I worked with Hero Motocorp. So through all these stints in engineering, I somewhere realized, okay, this is good, I am fine at it, but I really don't want to do it for the rest of my life. And I started exploring freelancing in the second year or third year of my college, like in this between that, and started content. And I started with content, and I started learning a little bit about design, marketing, and how personal brands and build. And then I finally specialized on LinkedIn when I started writing over there. So this is how pretty much it happened over the years. Yeah. तो लाइक व्यूअर्स को ना ये चीज पता नहीं कि पर्सनल ब्रांडिंग क्या होती है तो व्हाट इज पर्सनल ब्रांडिंग अच्छा. हाँ अच्छा, मेरे हिसाब से पर्सनल ब्रांडिंग is something which you build. Okay, it's like brands build होती हैं and they are known for something. What you are known for, or what you want to be known for, and who are you. If people know that about you, you will be able to attract better opportunities, you will be able to attract better network and build good bonds with people. So pretty much personal branding for me is about going out, telling your story online in a way that it helps you establish yourself as an authority in your space, or pretty much where you want to be, right? And for example, for a student, if he's or she is looking for a job in some domain, so what he or she can do is basically go online, talk about it, write about it. And when people are reading and coming to your profile, and they get the perception, okay, this guy or this girl knows something about it. So that's the starting very initiation of building a personal brand, I feel. And personal brand is basically standing for your strengths and backing them up strongly. Okay, you do this, and being very vocal about what you do so that you help attract better opportunities. like the what do you think about the future of engineering like every year 20 to 25 lakhs approx do engineers like even if you can say about the JEE exam for the entrance of IIT like every year 15 to 20 like it's a ratio of approximate so like what do you think about like after मतलब जैसे हर बंदा इंजीनियरिंग करके फिर कुछ ना कुछ अलग चीजें कर रहा होता है क्योंकि so वो इंजीनियरिंग पहले अपने मन से नहीं कर रहे होते हैं ना, उन्हें हाँ पता नहीं होता है कि वही करना था या क्या नहीं करना था. And बाद में जाके समझ में आता है. Even there's a very like popular joke which used to run in my college कि engineering is like a 4-year self-discovery tour. So you come, you discover, you get a 4-year vacation kind of thing, and then you discover the things, and then you decide what to do. And I've seen like my friends, like they went from proper engineers to being, like some of them went to MBA, some of them switched to designers, marketers, and whatnot, like literally. So I think the people, but one of the good things I have been observing the trend is like now people are becoming more aware, because I think now they are driven by more their curiosities and what careers they want to choose. For example, like my cousins, and they just don't want to blindly follow, and now they know other career options also exist. Like I did not know, and back in my times people were not really aware कि अच्छा इस तरह का भी कोई career option होता है या हम इस तरह का भी कुछ course कर सकते हैं. But अब I guess
social media and all those things are somewhere positively affecting कि सिर्फ engineering ही एक career option नहीं है, science से और भी बहुत सारे हैं. And I think the people, I think future in the engineers would be successful or whatever, like who will be doing really good. I think they will be driven by really their curiosities, and if they will be really interested only, then only they'll be able to sustain and survive that career. Otherwise not. I am an example of that. Like I think these are more important than degree, and nowadays Yes. the future. So like, what do you think about that? Yeah, skill, like degree is becoming less important only. Like it's okay to have a degree, it's good to have a degree. I think going to college, uh, 20 years back, it used to be more about degree and the name. Now it's more about the skills and the peer network you will be getting. So I feel that's the main purpose of going to college now, at least for the generation which is upcoming. They understand the value of it. They're not just chasing just degrees, and that's the best part, I feel. But yeah, a lot of people at the same time going to college is useless. I do not really agree with that. College plays a very important role in shaping your personality and a lot of stuff. So do not fall into the trap of those advertising stuff. Ki college does not play and college is shit. No, it's not. So like people have so many myths related to personal branding. Like it is a very difficult task. It takes a lot of time to make a personal brand. So like, what do you think about that? It is it is actually a difficult task. I think it becomes easy when you just do not take a lot of stress what to write every day and what how to showcase yourself. If you just showcase the truest self of you, the kind of things you care about and you are vocal about, it won't feel like a lot of work. But I won't say it's a like like cakewalk or something. No, it's not. You need to be very aware of how what you are portraying, because when it comes to people are very careful what they are writing. Because when I work with people who are doing personal branding, they know what they want. They are very specific about what they want to portray in public, right? Because it's about their image. So I think it becomes a less stressful thing when you are very clear about what you want to write, what you want to be known for. And consistency is very important, like showing up every day, because there's a concept of brand recall. When you show up every day, talk about the things you do, people tend to remember you a lot more than if you're showing once in a month. Like nobody recalls you. Who are you? Okay, so you have to start from again. So I think, yeah, it's difficult, it's not very easy, but definitely it's manageable with the right approach and strategy. And sometimes it becomes overwhelming as well, but with proper strategy, management and guidance, it's definitely manageable. So like, which social media platform you prefer to the viewers, and you can say your friends, your family, your colleagues, and to make a personal brand? Okay, I built mine on LinkedIn, so I try to say that okay, you should build on LinkedIn as well. No, that's not the right thing. I think you should build your personal brand on the platform where your target audience is present and where you feel most comfortable expressing yourself. For some people, it could be LinkedIn. For some people, it could be Twitter, and for some people, it could be Instagram or Pinterest as well. So see where your target audience is, present, and I think that according to that, you should choose the platform, not like, okay, that person is doing that, that's why I should do it. For example, if you're a CEO or founder and looking for, investors and looking for kind of grow your community in, like, the people, and that those people are present on LinkedIn, why not LinkedIn? But if you're a fashion influencer and you are thinking of, trends and kind of experimenting with the fashion ideas, and see that kind of audience and content is more popular on Instagram. But it doesn't mean there is no reach on LinkedIn or something. But yeah, but I think the number one platform would be of course according to your target audience and the content which is more prevalent there. Like, what is the role of networks, you can say, in your while making a personal brand? Because like, LinkedIn is the game of networks, and you can say consistent. Definitely. What do you think about I think networking is very important because and a lot of, for me, networking is not, I'm not very the strongest person you'll meet for networking. But yeah, I've realized the importance of it over time, because referrals and the people who knew me, a lot of clients I have got through them. So yeah, I think maybe if you just call it, talking to people really, if you are interested, what they do and just knowing their work, I think that would be the easiest way to build a network, and not really pitching right away. But yeah, networking is very important. I think if you grow your network, if you build bonds around it and talk,
see what people are doing, help them. Yeah, Mm. and one of the basic rules is help before you ask, give before you ask. So if Mm. you're just going on LinkedIn, and I said I get a lot of messages, hi, can you give me a job, with no introduction, nothing, and I'm like, I do not know what really I should do to this. So Yeah. if this kind of networking is a big no, please don't do such things. Okay. And genuinely show interest in people, build bonds along the way, and always remember personal branding is a two-way dialogue. It's Mm. not a one-way thing. You just keep publishing content and building the brand. No, you Mm. need to get in touch with people and see what they are doing, help them along the way, and they will help you along the way. This is pretty much the rule. That's it, how it goes. तो लाइक आपको किसी भी चीज में अगर आपको घुसना है तो आपको यूनिक बनना पड़ेगा बिकॉज लाइक अगर आप यूनिक नहीं है तो नो वन विल ट्राई टू आइडेंटिफाई यू लाइक कि हर्षित ये चीज ये तो इसे सारे कर रहे हैं तो लाइक व्हाई आई विल चूज यू तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट कि अगर आपको पर्सनल ब्रांड बनाना है तो आपको यूनिक कैसे बन सकते हैं या फिर हाउ टू बिकम अ यूनिक आई थिंक यूनिक बनना कुछ बाहर से नहीं आता है, यूनिक इज योर स्टोरी। मुझे लगता है कि हर किसी की स्टोरी, हर किसी के एक्सपीरियंसेस और हर किसी का जो जर्नी है वो बहुत यूनिक होता है, और अगर आप उसे सही से पोर्ट्रे करें तो वो आपकी ऑथेंटिसिटी भी रखेगा, बना के रखेगा, और आपको यूनिक भी साथ में बनाएगा। बट अगर आप कुछ ऐसे फॉल्स स्टोरी बना रहे हैं यूनिक बनने के लिए, दैट इज अ बिग बिग नो। डोंट डू दैट, बिकॉज इफ यू आर स्पीकिंग समथिंग विच यू वोंट बी एबल टू बैक अप सम डेज लेटर, people will identify you are nothing but just a piece of lie or somebody who's lying, that's it. Okay, so यूनिक बनने के लिए लोग, मैं देखती हूँ बहुत यूनिक बनने की कोशिश में बहुत सारे फॉल्स अटेम्प्ट्स करते हैं, बट नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। जो आपकी स्टोरी है, जैसे कि मेरी, मुझे जो यूनिक बनाता है आई गेस मेरी स्टोरी है वो, कि मैंने एक इंजीनियरिंग की और मैंने इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा किया, एक बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी भी ले ली, ऐसा नहीं था खराब किया तो नेक्स्ट करियर में आए, जो कि अच्छा किया फिर आए। एंड दिस इज अ स्टोरी विच मेड मी यूनिक, आई थिंक आई फेल्ट इट कि अच्छा था, और इससे मुझे जो सीख मिली अपने करियर में, वो आप बहुत सी चीजों में अच्छे हो सकते हैं, बट जरूरी नहीं कि वो आपको सेटिस्फाई भी करे, आपको वो लगे कि आपको पूरे टाइम करना चाहिए वो चीज। सो समथिंग विच you are good at doesn't make made me happy, something which I was good at. So this was a learning from my career, and this is a learning I share on platforms, and people tend to like it because I think they also face these kind of situations, and they see their story in mine, this reflection of their life in mine sometimes. So I think your story makes you unique. So own your story, become the biggest supporter of what you believe into, have faith in that, and I think that pretty much makes you unique, because nothing attracts us as much as a person who owns who he is. So I think that makes you unique. Like I think that nowadays people want everything every day new. Like I want new today, I want next today. So like everyone like कि trends बहुत जल्दी बदलते हैं. Trends like आज किसी चीज का trend है, कल किसी और चीज का होगा, परसों किसी और चीज का होता है. तो like trends बहुत जल्दी Agreed. बदल रहे हैं. And आपको क्या लगता है कि trends के हिसाब से आपको personal brand बनाना चाहिए या फिर personal brand पर आपको focus करना चाहिए, trends पे focus नहीं करना चाहिए? मेरे ख्याल से आपको पर्सनल ब्रांड पे फोकस करना चाहिए, और अगर वो ट्रेंड आपसे मैच कर रहा है, आप उस पर मेल खा पा रहे हैं अपनी ब्रांड को, तो ही करना चाहिए, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। मेरे साथ जैसे कि पहले, आप कुछ साल पहले देखोगे तो ये स्टार्टअप करने का बहुत ट्रेंड था, तो बहुत सारे लोगों ने उस ट्रेंड में स्टार्टअप किया है, नहीं चल पाया। उसके बाद अभी इन्फ्लुएंसर बनने का भी बहुत ट्रेंड है, और फिर कुछ दिन में शायद पर्सनल ब्रांड का भी अच्छा खासा ट्रेंड आ जाएगा। सो डू नॉट डू समथिंग इफ यू डू नॉट फील कि this syncs with you. I think that would be, you will feel overburdened, you will feel overwhelmed, and you won't be feeling like yourself, and that would be the biggest failure, I guess, of all this, doing this all. Because I think ultimately we want to feel like ourselves, and we want to feel powerful in our own shoes. अगर वो ट्रेंड्स आपको पावरफुल बना रहे हैं, आपको लग रहा है अच्छा, आपको लगता है कि वो आपकी ब्रांड के साथ मेल भी खा रहा है, तो सही है। अदरवाइज आप नहीं कर सकते तो कोई जरूरत नहीं है कि आपको जबरदस्ती उस ट्रेंड को फॉलो ही करना है जस्ट टू increase your followers or something. No, it's not, it does not work like this in longer run. तो लाइक बड़े बड़े जो जाइंट्स बन चुके हैं आज, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स वो जाइंट्स बन चुके हैं, तो वो कैसे, उनकी जो जर्नी थी अगर आप थोड़ा सा बता सको कि लाइक कैसे वो बने हैं? आई थिंक मैं जितना अभी तक मैंने जितना पढ़ा और सीखा है, उससे मुझे यही लगता है कि जितने भी बड़े जाइंट्स और ब्रांड बिल्डिंग में है, वो सिर्फ ब्रांड बिल्डिंग नहीं, अपने ऑफ कोर्स बहुत अच्छे प्रोडक्ट, कस्टमर सर्विस, एंड अपने जो उन्होंने प्रोमिस किए थे उस पर खरे उतरे हैं, वो भी एक पार्ट है। बट अगर सिर्फ ब्रांड बिल्डिंग में देखा जाए तो आई थिंक कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो कह रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वो चीज़ कंसिस्टेंटली डिलीवर कर रहे हैं कि नहीं, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मार्केट में प्रेजेंट हो कंसिस्टेंटली, और कंसिस्टेंसी सिर्फ ब्रांड बिल्डिंग में कलर्स और
फॉन्ट और लोगो से नहीं आती है, आपके प्रोमिसेस आप जो बोल रहे हो उससे भी आती है। तो वो चीज़ बहुत कंसिस्टेंट होनी चाहिए आई फील। एंड ऑफ कोर्स ब्रांड बिल्डिंग में जो प्रोमिसेस हैं आप वो उस पर खरे उतरे, आपकी ब्रांड ने जो भी कस्टमर से प्रॉमिस किया अगर आप उस पर खरे नहीं उतरे तो फिर कस्टमर आपको भूल जाएंगे, बहुत टाइम नहीं लगेगा। दैट्स हाउ अ ब्रांड कल्ट फॉलोइंग या लॉयल्टी इज बिल्ट, कि एकदम कंसिस्टेंट वैसे ही जैसे कुछ साल पहले थे वैसे ही आ जाए। अगर चेंज भी किया है तो वो चेंज इतना स्मूथ होना चाहिए कि प्रॉब्लम ना है। जैसे कि आई थिंक वन ऑफ द चेंजेस आई सॉ, क्रोफर्स रीब्रांडेड एज ब्लिंकिट। सो वो उनकी आई गेस उसके साथ जा रहा था, मुझे जहां तक लगा ब्लिंकिट लाइक इतनी जल्दी डिलीवरी हो रही है आपकी, and how they entirely revamped and everything. They ran a lot of ads and everywhere, so everybody knew now Grofers is now Blinkit. Now I don't even remember Grofers, I just call it Blinkit. That is the effect. I think अगर rebranding भी कर रहे हैं तो आप इतने उससे करें कि everybody knows it, why is it done, and उसकी importance भी है, मतलब जरूरत थी भी कि नहीं थी। तो I think जितने भी बड़े brands build होते हैं, consistency बहुत important in your messaging, in your voice, in your promises and whatever you are doing, rather than just logos, colors, वो तो important है ही। तो वो चीज़ जरूर करें। कस्टमर सर्विस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कस्टमर शुड बी हैप्पी, दैट्स हाउ यू बिल्ड अ ब्रांड कल्ट और लॉयल फॉलोइंग, what we say। Yeah. Like, what do you think about the Facebook and the Meta जो rebranding हुई है उनकी? तो like, what do you think about that? आई थिंक जब फेसबुक मेटा से रिब्रांडिंग किया तो उनका स्कोप भी काफी बढ़ा है। पहले फेसबुक सिर्फ एक सोशल नेटवर्क का उस तरह से उन्होंने स्टार्ट किया था। तो आई थिंक मुझे वो जस्टिफाइड लगा जो उन्होंने ब्रांडिंग की है मेटा से, एंड स्पेशली जैसे उनके एफर्ट्स जा रहे हैं मेटावर्स और उस तरह की जो वो बातें कर रहे हैं। तो उस हिसाब से मुझे तो अभी सही लग रहा है। आगे देखते हैं, मैं भी एक्साइटेड हूँ, आप भी रहिए कैसा जाते हैं आगे। So like, जब आप रीब्रांडिंग करते हो तो हर टाइम ऐसा होता है कि लाइक आपको कुछ नया ही मिलेगा, या लाइक आपकी वो डाउनफॉल भी जा सकता है। लाइक ग्रोफर से लिंक्ड हुआ तो वो एक अच्छा बेनिफिट रहा उनको, फेसबुक से मेटा हुआ मेटावर्स की तरफ तो उनको एक बेनिफिट हुआ। तो लाइक एवरी टाइम यू से लाइक अगर आप रीब्रांडिंग करते हो तो बेनिफिट्स होते ही ऐसा कोई जरूरी नहीं कह सकते हैं। बहुत बार रीब्रांडिंग नहीं अच्छी जाती है। मुझे इस समय शायद कोई एग्जांपल याद नहीं आ रहा है सच, बट रीब्रांडिंग फेल भी हो सकती है आपकी। आई थिंक ट्रॉपिकाना का ही शायद पैकेजिंग किया था, आई एम नॉट श्योर ट्रॉपिकाना का था या किस ब्रांड का था। उन्होंने जो उनका पैकेज होता है, पैकेट होता है ना आपका, वो टेट्रा पैक्स जो होते हैं, उनकी पैकेजिंग डिजाइन जो थी जिससे हम वो लाइक स्ट्रॉ वाला जो पीते हैं, उसमें उन्होंने पूरा पैकेजिंग रीडिजाइन कर दिया था, उससे उनको काफी लॉस हुआ था। लोग लोग नहीं रिकॉग्नाइज कर पा रहे थे। जो उनकी प्रॉपर ब्रांड अपील जो प्रीवियस वाली थी वो ज्यादा अच्छी थी। तो अगर आपने सही से नहीं किया है तो फिर आपके लिए काफी घातक भी हो सकते हैं। जैसे कि ट्रॉपिकाना, आई गेस अगर मैं सही नाम ले रही हूँ तो उनके लिए हुआ, टेट्रा पैक जो उनके थे। तो अगर आप सही से कर रहे हैं तो सही, अगर नहीं कर रहे तो फिर वो काफी प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है आपके लिए। बिकॉज रीब्रांडिंग करना एक थोड़ा सा रिस्की भी होता है, क्योंकि आपकी ब्रांड इमेज ऑलरेडी लोगों के माइंड में पहले से है। आपको लोग जानते हैं उस कलर उससे, राइट। अगर आप पूरा रीब्रांड कर रहे हैं तो फिर आप मेक श्योर करो कि वो सबको पता चले। एंड उस तरह से ग्रोफर्स जब ब्लिंकिट बना, कितने एड्स मैंने उनके यूट्यूब वगैरह में देखे जो सिर्फ ब्लिंकिट ग्रोफर्स इज नाउ ब्लिंकिट का एड था, सिर्फ ऐसा। तो वो दिमाग में उन्होंने बैठा दिया हर जगह। उन्होंने जितने भी चीजें जिस भी उसमें पॉली बैग में भेजते हैं वो भी पूरा ब्लिंकिट येलो, जो उनका कलर है येलो ग्रीन वगैरह, वो पूरा एकदम उस तरह से कर दिया उन्होंने। तो आई गेस वो जो एक रिकॉल या वो बिल्ड करें दिमाग में कलर से, चाहे वो अपने जो भी नाम से है या फिर जिस तरह से भी वो ऑपरेट कर रहे हैं उस हिसाब से, आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी ब्रांडिंग को सक्सेसफुल करना चाहते हो। इवन कई बार तो रीब्रांडिंग इतनी छोटी सी पैकेजिंग में होती है आपको समझ में भी नहीं आता है। कैडबरी का लोगो शायद चेंज हुआ था कुछ टाइम पहले, तो वो बहुत हल्का सा कुछ था जो बहुत ध्यान नहीं देगा उसे समझ में भी नहीं आएगा। तो कई बार ऐसे भी होता है। तो लाइक एवरीवन लाइक वांट्स बेनिफिट। लाइक अगर मैं ये चीज इसलिए करूँ क्योंकि मेरे को इस चीज से बेनिफिट होगा, तो लाइक पर्सनल ब्रांडिंग से तो एक पर्सनैलिटी लेवल पर, यू कैन से एक पर्सनल लेवल पर, सोशल लेवल पर जो क्या आप बेनिफिट्स हो सकते हैं। आई थिंक पर्सनल ब्रांडिंग से एक तरह से आप ऐसा समझ लो कि अगर आप कुछ काम करते हो एंड आपको लोग जानते हैं उस काम में बहुत अच्छे से, सो आपको कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। जैसे कि आप जो ये हम पॉडकास्ट करें, या आपने मुझे डिस्कवर किया पर्सनल ब्रांडिंग से ही, क्योंकि मैं प्रेजेंट हूँ इंटरनेट पे, मैं लिखती रहती हूँ इसके बारे में, और आपने सोचा अच्छा ठीक है इनसे बात कर सकते हैं, इनके साथ एक पॉडकास्ट की जा सकती है। अगर ऐसी कोई जॉब ढूंढ रहा है फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप, मैं मार्केटिंग में जॉब ढूंढ रही हूँ, मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, मैं मार्केटिंग के बारे में बात करती हूँ काफी ज्यादा और इसके बारे में, और अगर मैं किसी दिन डालती हूँ कि मैं एक जॉब चेंज या इस तरह का सर्च कर रही हूँ, तो बहुत सारे लोग होंगे जो शायद मेरा रिज्यूमे भी नहीं मांगेंगे और बोल देंगे ठीक है आ जाओ एक इंटरव्यू कर लेते हैं। And मेरे साथ ये हुआ है, मुझे इनबॉक्स में ऑफर्स आते हैं कि आप अच्छा ठीक है अपॉर्चुनिटी है, आप करना चाहोगे क्या, एंड विदाउट अप्लाइंग, मैंने कभी कोई अप्लाई नहीं किया कहीं पे। सो दिस इज हाउ यू बिल्ड अ ब्रांड, कि लोग आपको जानने लगे, आप
उनको उसके बारे में, अगर उनके पास कोई दिमाग में कोई अपॉर्चुनिटी है तो आपका नाम पहला होना चाहिए उनके दिमाग में जो है। तो जस्ट इमेजिन कितनी ज्यादा एंडलेस पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं आपके लिए अगर लोग आपको जस्ट जानते हैं आप जो करते हैं उसके लिए। सो पर्सनल ब्रांडिंग इसी का नाम है और कुछ नहीं है पर्सनल ब्रांडिंग। Yeah. So like you will say consistency is the king. Consistency plays an important role. Like can you explain the important role of consistency? Like you played in your life as well. Like, आई थिंक कंसिस्टेंसी पर्सनल ब्रांडिंग में क्या हर चीज में इंपॉर्टेंट होती है। कंसिस्टेंसी फॉर मी, कंसिस्टेंसी इज द सेकंड नेम ऑफ डिसिप्लिन. Being very disciplined what you do and doing it every single day in the very consistent manner, that is for me consistency. And consistency जब लोग बात करते हैं स्पेशली पर्सनल ब्रांडिंग में या कंटेंट क्रिएशन में, तो फिर वो बात करते हैं कि रोज पोस्ट करनी चाहिए and या जब भी कर रहे हैं आप दूसरे तीसरे दिन, definitely. मतलब कंटिन्यूअसली रखें, उसको कंटिन्यू रखें, वरना वो अगर ब्रेक हो जाएगा पैटर्न तो आपकी जो ब्रांड रिकॉल आपने पूरी बिल्ड की है, लोग जिसको लिए आपको जानते हैं वो भूल जाएंगे कुछ दिनों बाद अगर आप नहीं करेंगे कंसिस्टेंसी से, राइट? एंड दूसरी एक चीज मुझे लगता है जो इग्नोर करते हैं, एंड इग्नोर नहीं करनी चाहिए कंसिस्टेंसी में, वो कंसिस्टेंसी ऑफ व्हाट यू आर सेइंग एज वेल. तो आप जो बात कर रहे हैं ना उसको आप एक बात को 100 तरीके से बोल सकते हैं कि नहीं, पहले तो ये देखें. क्योंकि अगर आप हर दिन रोज एक अलग अलग बात बोल रहे हो, अलग अलग चीजों के बारे में बोल रहे हैं, तो इंसान को नहीं पता दूसरे वाले पढ़ने वाले को कि क्या करना चाह रहे हैं और ये किस फील्ड में अपने एक्सपर्ट हैं या किस फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं. तो आप पहली बात तो ये जरूरी है कि कंसिस्टेंसी जिस चीज की आप बात करते हैं उसी के बारे में. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस अ लाइन आई डोंट रिमेंबर हु सेड इट ऑन लिंक्डइन ओनली. You should know to talk about one thing in 100 different ways, so that makes you consistent, and that helps the people who are reading your content to become very clear what you do and how you do it, so that when they read something, or they think they get an opportunity, or they see an opportunity something regarding that, they should recall your name. Okay, this person can help. Okay, and then they come to you. This is how the whole loop functions in personal branding. So I think consistency, of course, post creation में important है. दूसरी चीज consistency in what you are saying, that is also very important. Yeah, There are दो so चीजों many में. people who make himself or herself as a brand, like Gary Vee or Jay Shetty. So like Jay Shetty or Gary Vee's brand power. What do you think about that? Like brand power and uh, आई थिंक उनकी काफी ज्यादा ब्रांड अपील है, और वो जिन चीजों के लिए स्टैंड, मतलब उनका जो स्टैंड है, जैसे कि लाइक जय शेट्टी का, एज फार एज आई नो, कि ही इज इनटू स्पिरिचुअलिटी एंड टॉक्स अबाउट a lot of self reflections and how to live life in a way that is not overwhelming, that is not something confusing, and like we are sometimes trapped in a lot of different things, how to get to a level, like he talks a lot about that in ways, in a lot of ways, like I think I recall he started from ISKCON, Krishna consciousness, and then he became a monk, and then he started doing these things. So I think the overall his story is matlab personifies what he talks. So he talks about what he knows, and that's why I think his brand is built over the years. It's not just a one day thing. He started back a lot of years back. We started just knowing him like few years the few years when he started showing up consistently on social media. Otherwise he started back in 2012, 2013. Those were the times he started into. So I think, yeah, definitely the brand power is a lot, and whatever they are saying, of course it gives a lot of weight. It similar goes to Gary Vee. Similar thing happened for him. He started from his father's wine business, and then he went on to launch marketing agencies, VaynerMedia, and a lot of stuff along with that. And he talks about marketing, personal branding, and building the brand and all. I think that of course backs up his agencies to a good extent, what expertise he has. So yeah, of course, personal brand can help you build good businesses, can help you influence people, and can help you get more opportunities. These two people are examples of the same. So I think like you have to explore something like you are giving an example of Gary Vee. He's joined his father wine business. Like I think you have to market. You have to explore like what are going in the market. What is in the market. So like what do you think about that? Is exploring necessary for a person to build a personal brand? Because you I have think, an idea of. yeah, it is. I mean, for me, like a kind of person I am, I love learning new things and I love exploring. I am not even sure what I'll be tomorrow. For today, I definitely know. That's why I said she's a personal branding and marketing consultant today. So I think you should keep exploring. And the
I think the part of exploring how much it helps you in building personal brand, I think it's pretty much built because when you are exploring in your field or talking about what you are, it helps people to understand, okay, you are a person who keeps upskilling and who is curious about new things, and who doesn't like such a person? Everybody loves them. So I think it's very important. It's keep exploring, keep learning new things. Whether you are building a personal brand or not, it's the like the basic thing you should be doing in your life, I think. So like, I want to know about you. Like, what is your favorite personal brand? I think my favorite personal brand is where most of the people think it's from marketing and business. No, it's not. It's from she's an artist, musician, and she describes herself as a filmmaker as well. And Jonna Juntin. So she is a Swedish filmmaker and a musician and an artist as well. She lives in Sweden, north of Sweden, I guess, and she makes these amazing videos of Nordic countries, like especially Sweden, and how the culture is there and how usual life is there. Basically, she vlogs her own life, and she is there. Like I think she started in 2011, so it's been long, and her videos like come as a therapy to me at least. So it's very very calm videos, and I felt when I was watching and I studied a little bit. And he has a jewelry. She has a jewelry business as well. I think I referred to he, but wrong. It's her. So yeah, she has a jewelry business as well, and उनका आप पूरा देखोगे जब ना, तो उनका समझ में आएगा कि उन्होंने कैसे अपनी लाइफस्टाइल से पूरा जो उनके पैशंस थे, लाइक पेंटिंग, म्यूजिक, फिल्म मेकिंग एंड ज्वेलरी बिजनेस एंड ऑल, तो उन्होंने कैसे अपने पैशन से एक ब्रांड बिल्ड की एंड फिर उससे एक बिजनेस भी बिल्ड किया. शी इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ दैट, आई फील. एंड she does not have, like you say, you don't say she has following or something. She has fans. Just look at her YouTube and go in her comment section, and you'll see how people love her, like what she does. And I think this comes only from when you're building your brand with your strengths and what you truly stand for. And she's the one, and she's the example of that. I think she's like one of the people you'll find who are truest to what they believe into. They're not following anything to just build a business. Even she never had a business in the first place. She just did something she loved, and then she made a business out of it. So I think that was one of the best examples of for me, because it's one of the most authentic as well I saw, which is not really based, did not really come out of just a business agenda or something. It just came out of her true passions, and then she cashed upon those trends using her business as well at the last. So yeah, she's an amazing artist as well at the same time. So if you want to check, yeah, I can just try it. I can just spell it out. JOANNANAGINTON. So yeah, you can go and search her. So yeah, that's my favorite personal brand in the world for now. Like, people have no idea about the content they create, like what they have to post, because like no one have like map content create karta, but no one else, like my friends, my you can say my neighbors, no one know about the content creation, or you can say the personal branding. So like how they get the content idea, because then they can make a personal brand. डेफिनेटली आई थिंक कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप स्टार्ट कहाँ से कर सकते हो? आप स्टार्ट कर सकते हो अपने गोल्स आपके क्या है. सबसे पहले तो आप ये जानो कि आप क्यों पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर रहे हो. अगर आपको जब तक ये क्लियर नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम लो, थोड़ा सा क्लैरिटी लो. अगर सुपर क्लियर भी नहीं है तो ठीक है, क्योंकि सबको सब कुछ नहीं पता होता है एकदम स्टार्टिंग में. सो आपको एटलीस्ट हल्की आउटलाइन भी है कि आपको किस तरह से खुद को पोर्ट्रे करना है. अगर आपको फॉर एग्जाम्पल आपका गोल है कोई जॉब लेना, ठीक है, एट द एंड ऑफ 5-6 मंथ्स या अ ईयर, आप कॉलेज में हो, ठीक है, आपको एक जॉब लेनी है, आपको मान लो आपको जॉब लेनी है कंप्यूटर साइंस में या डेटा साइंस में फॉर एग्जांपल, तो आपका फिर गोल क्या होना चाहिए? आपके कंटेंट कुछ इस तरह के होने चाहिए कि जो आपको पोर्ट्रे करें कि आप उसके एक स्टूडेंट हैं, आप वो लर्न करें चीजें, आप क्या प्रोजेक्ट्स करें, आप उसके बारे में बात कर सकते हैं, आप कौन से लीडर्स या कौन से प्रोफेसर्स को उस फील्ड में फॉलो करते हैं अगर आपको इंटरेस्ट है, आप कौन से कॉम्पिटिशन्स में पार्ट ले रहे हो, आप कौन से कोडिंग लैंग्वेजेस पढ़ रहे हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आप उन सब चीज़ों के बारे में बात कर सकते हो. इससे आपका क्या होगा? इससे आपका प्रेजेंस बनेगा, और एट द सेम टाइम आप नेटवर्क करो उन लोगों से जो आपको जॉब दे सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल HR हो सकते हैं वो, और लोग हो सकते हैं एक दूसरे कंपनीज के. अगर आप स्टार्टअप्स में हो तो आप स्टार्टअप्स को टारगेट करें तो आप फाउंडर्स और CEO से कनेक्ट कर सकते हो, उनसे बात कर सकते हो वो किस चीज़ों पे काम कर रहे हैं, कौन सी टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे हैं. सो इन शॉर्ट इन सब चीज़ों को करके आप कंटेंट अपना बहुत सॉर्ट कर सकते हो कि आपने बात कर ली. फॉर एग्जाम्पल अभी 5 आइडियाज तो मैंने ही दे दिया आपको कि आपकी जर्नी बता दो एक में, दूसरे में आप बता दो आप कौन सी लैंग्वेज लर्न कर रहे हो, और तीसरे में बता दो आपको
किस टाइप की जॉब आप देख रहे हो, अगर आप अनाउंस कर रहे हो कि यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, जस्ट डोंट राइट आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, से हाउ काइंड विच काइंड ऑफ जॉब यू आर लुकिंग फॉर। एंड आप चौथी चीज में आप बात कर सकते हो कि अगर आप कुछ किस रीडर या किस पब्लिकेशन या किस प्रोफेसर को फॉलो करते हो इस फील्ड में। पांचवी चीज में आप बात कर सकते हो क्या नया हो रहा है इस समय। तो इससे आपका पूरा एक इंसान जो अभी पढ़ेगा आपकी प्रोफाइल पे लिंक्डइन पे आएगा, उसको पता चल जाएगा अच्छा दिस स्टूडेंट इज इंटरेस्टेड एंड दिस स्टूडेंट डज अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड यू कैन टॉक अबाउट योर लाइफ इन जनरल, कॉलेज में कैसा है आपका। definitely. सो इस तरह की चीजों से आप बात करोगे तो इससे आपकी एक ब्रांड बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगी जब आप रोज अपना वर्क दिखाओगे। आप सिंपल अगर आप वर्क भी अपना शेयर करो, इसके लिए आप एक बहुत अच्छी किताब है जो मैं आपको बता सकती हूँ, शो योर वर्क बाय ऑस्टिन क्लेयन। वो इसी चीज की बात करते हैं कि अपना वर्क कैसे दिखाएं so that it helps you build a brand and of course get you more opportunities. तो आप एक वो भी किताब देख सकते हो। So like there are so many startups, like there are the era of startups in India as well. Like to 2020 to 2030, the era of world of startups and new entrepreneurs are coming. So like how personal branding is important for startups as well as for entrepreneurs. I think personal branding is very important. Helps the build, can help you, scale your brand very, very fast, I feel. Because when you are building a brand from the scratch now, and if a human face is attached to that brand, it helps people believe and it helps people trust you much more as compared to just a faceless logo. For example, even this is the statistics prove, like I don't have to say it again and again. I think share the humans or the people who are associated with the company, whether it employees or CEOs, if they are active on the social media, people tend to trust that brand a lot. One of the major examples of these personal branding is Elon Musk. Elon Musk is way more than followers and beliefs and fans than Tesla, right? And these people are becoming the ambassadors of their brand, I feel. So by building a personal brand, you can become the first and the most important ambassador, I feel, of your brand when nobody is believing. So you should be, I think, as a co-founder of a budding startup, you should definitely start talking about your mission, vision, and what you guys are doing, what stories you have, what you are planning to change, and why this startup exists in the first place. So when you talk about these things, it help people understand why are you here. It help people trust you if they want to buy from you. And this whole thing helps not only establish you as a leader in the industry, which of course helps your brand, but also helps your brand reach new heights, because some social media, their CEO or senior executive gives a damn about people and they're active there. Okay, so they talk to people, and so that whole narrative, I think, is very important to help people see what you are doing and help people believe you at the same time, and help people believe in your vision and help them understand what you really want to accomplish. So they will be supporting you if they know these things. So like other people think about they are flexing your business, like they are flexing themselves or their business, or you can say it's like a kind of show. Like अगर मैं कुछ पोस्ट कर रहा हूँ तो ये शो ऑफ टाइप हो रहा है, like यार तूने ऐसा कुछ नहीं किया या तेरा मिशन है पर मुझे नहीं लगता तू ये अचीव कर पाएगा. So what do you think about that? Like flexing and the show off thing, it's a right thing or wrong? I think there is, for me, I feel like if I am going to write something which is going to help even a single person, I'm going to write it. Simple as that, simple. So don't, of course, there will be a lot of people who won't be liking this notion, who will be telling you not to do this, right? At the same time, don't do this, please don't listen to them. Do what you think is right. And of course, at the same time, see, like if that helps you, that helps the people, please keep doing it, because everything what you're going to say has been said before in some or other way. But it doesn't mean you should stop saying if you want to. So please do it. So like there are two terms. One is personal branding and what is business branding. So like what do you think about these two terms? For me, I think personal branding is majorly helping you to present yourself and build yourself as an authority in the space you want to. Like for example, okay, let me give you example of a CEO or a company. Let's see, okay. For example, Gary V has a personal brand, and that is his personal brand. But of course, it benefits his company, like for example, VaynerMedia, right? But VaynerMedia has a brand also, like they have a logo, they have their vision, mission on all their website stuff. So that is also business branding. So I think personal branding and business branding, both are very important. You should not neglect any of this. Personal branding is a plus because it helps you, give a human face, humanized face. Helps you make your brand humanized. Humanize the brand. I think, yeah, काफी बार human हो गया. So humanize the brand. So
एक तरह से जब ब्रांड्स बनती हैं तो पहले क्या होता था, सिर्फ लोगोज होते थे मोस्टली, एंड एक लोगो बना दिया, एक कंपनी स्टार्ट कर दी। अब पर्सनल ब्रांडिंग का जब से कॉन्सेप्ट आ रहा है तो एक तरह से उस लोगो, उस कंपनी को एक पहचान मिल रही है, उसके सीईओ, फाउंडर या जो भी है, ठीक है, उनसे। तो इससे क्या होता है कि लोग उस कंपनी को ज्यादा ट्रस्ट कर पाते हैं, बिकॉज एक इंसान उससे एसोसिएटेड है, वो देख पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इलॉन मस्क इन टेस्ला, तो टेस्ला का अपना ब्रांड है पूरा, ऐसा नहीं है उनकी कोई ब्रांड नहीं है, उन्होंने कंपनी को छोड़ दिया है, कुछ नहीं है। उनकी भी प्रॉपर ब्रांड है, बिजनेस ब्रांडिंग। तो बिजनेस ब्रांडिंग में बहुत सारी चीजें आती हैं। हम स्टार्ट करते हैं एक लोगो से बनाना, स्ट्रैटेजी बनाते हैं कैसी ब्रांड होनी चाहिए, देन विजन, मिशन, डिफरेंशिएटर, अ लॉट ऑफ थिंग्स, स्टोरी क्या है उसकी पूरी होल, उसका भी एक एग्जिस्टेंस है। So do not neglect that. That is also very important, brand building, and keep sharing stories from that brand as well. But as a personal brand, from a CEO and founder के angle से भी आप जो बात करोगे, वो भी आपकी brand को strengthen करेगा, and आपको एक तरह से help करेगा you establish as an authority in that field. So because it helps you, kind of give a human touch to that brand. It is not just a faceless logo now. Okay, that will of course give you an edge over other brands if you have a personal brand. So like what do you think about that कि लोगों को अब सोचना चाहिए कि like मुझे अब एक ब्रांड बनाना चाहिए या बनाना शुरू करना चाहिए, तो establishing a brand. डिपेंडिंग कि आपके गोल्स क्या है, आई थिंक उस टाइम पे आपको देखना चाहिए। अगर आपका लग रहा है कोई गोल पर्सनल ब्रांडिंग से हो जा रहा है या आप कर पाओगे बेटर अच्छे से पूरा, तो कर देना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप कॉलेज में हो तो आप सोच सकते हो पर्सनल ब्रांड बनाने की। अगर आपको नौकरी चाहिए या फिर आपको जो भी करियर में, पर्सनल ब्रांड हमेशा हेल्प करेगी। इट्स बेसिकली शेयरिंग योर स्टोरी एंड टॉकिंग टू पीपल, बिल्डिंग योर नेटवर्क, सी टेलिंग पीपल ओके आई डू दिस एंड इफ यू हैव एनी अपॉर्चुनिटी आई एम देयर, right? That kind of thing. So yeah, of course it helps you in many ways. So the time when you think okay, one of my goals is this, and I think my social presence, my online presence will help me, then do this. Definitely go ahead. Saloni Maurya di, like how's this podcast going on? मुझे तो बहुत ही कैंडिड और लग रहा है, मजा आ रहा है, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा बहुत स्ट्रेसफुल या एकदम टू द पॉइंट आंसर देना है। सो एकदम दिस इज अ कैंडिड टॉक एंड आई रियली एंजॉयड दैट ऑनेस्टली। Yeah, so like मैं अपने बारे में पूछना चाहूंगी like how Harshit Luthra can become a brand, you can say, I can. डिपेंड्स हर्षित लूथरा का गोल क्या है, हर्षित लूथरा किस फील्ड में ब्रांड बनना चाहते हैं। तो अगर आप ऐसा पॉडकास्टर बनना चाहते हैं तो आप अपनी पॉडकास्टिंग के जर्नी के बारे में लिखते रहिए, बताते रहिए कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है, क्या आपके हिसाब से क्या इंडस्ट्री में होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उसके बारे में लिखते रहिए। एंड ऑफ कोर्स लोगों से बात करते रहिए जैसे आप कर रहे हैं अभी भी, और अपना नेटवर्क बनाते रहिए। एंड आई थिंक yeah, that these are, and being consistent is very important. And along the way, and whenever you feel there's a need for improvement, improve and see pivot accordingly if you want. So I think that's all pretty much. And it there are a lot of minor factors as well, but these are the major ones which you can do. So like students are not so confused like what they do, like which skill they do, like they wanted to like I want to explore this thing, that thing, then that thing and that thing. So like their confusion like मैं यहाँ जाऊँ, मैं यहाँ जाऊँ, मैं यहाँ जाऊँ, तो like वो कंफ्यूज है। और फिर वहीं पर पर्सनल ब्रांडिंग में उनको दिक्कत करती है like मैं पर्सनल ब्रांड भी कैसे बनाऊँ, क्योंकि जब वो खुद ही कंफ्यूज है तो वो किस चीज के बारे में लिखेंगे। तो लाइक स्टूडेंट्स के लिए पर्सनल ब्रांड आप बताओ कि कैसे कर सकते हैं। आई थिंक स्टूडेंट्स को पर्सनल ब्रांड बनाने से पहले तो एक्सपेरिमेंट करना चाहिए अपनी लाइफ में, मेरे हिसाब से। जब मुझे थोड़ा बहुत आइडिया हो गया कि मुझे मार्केटिंग, स्टोरी टेलिंग और ये ब्रांडिंग में ही जाना है, तभी मैंने मतलब उसके बारे में बात करना हल्का हल्का स्टार्ट किया था। मतलब उस तरह से चीजें लिखना स्टार्ट की थी। पहले आप आइडेंटिफाई करो कि आपको क्या चीज करनी है, एंड अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपको अच्छी लगी कि नहीं, आप 2 दिन उसमें कोर्स करो, एक छोटी सी इंटर्नशिप कर लो, बहुत ही सिंपल तरीका है। आप एक इंटर्नशिप कर लो जा करके, उसके बाद आपको काफी हद तक चीजें समझ में आ जाएंगी। या फिर आप लिंक्डइन में जाके आप उन्हीं प्रोफाइल में जो लोग हैं उनसे बात कर लो एक बार कि उनका एक दिन कैसा दिखता है इस जॉब में, या वो क्या करते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं तभी उसमें जाइए। अदरवाइज बहुत बार क्या होता है, हम सोचते हैं वो बाहर से कुछ बहुत ग्लैमरस दिखता है और अंदर जाके उसमें कुछ ऐसा नहीं होता है, एंड वी आर डिसअपॉइंटेड। एंड ये बहुत लोगों के साथ में होता है, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि क्या वर्क स्कोप है, क्या इसकी तरह की क्या स्किल्स चाहिए एग्जैक्टली। वो तो हम बस इंटरनेट से पढ़ते हैं। इंटरनेट में बहुत सारी चीजें सही भी होती हैं, बहुत सारी चीजें इतनी क्लियर नहीं हो पाती हमें कि एग्जैक्टली कैसे दिखेगा। तो आप जो भी करना चाहते हैं पहले तो आप थोड़ा सा क्लैरिटी लीजिए उस पर। और फॉर एग्जाम्पल, और ऐसा नहीं है, अगर आपको अभी कुछ अच्छा लग रहा है आप उसके बारे में बात करना शुरू कर सकते हो। लोग चेंज करते हैं करियर्स, आजकल करियर चेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आप दूसरे करियर में बेटर कर सकते हैं तो कर सकते हैं। अगर आपको अभी के टाइम पे ऐसा लग रहा है कि आपको फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग से स्टार्ट करना है, आपको लग रहा है कि आप स्टोरी टेलिंग एंड मार्केटिंग के बारे में करना चाहते हैं, तो आप उसके बारे में पढ़ रहे हैं, आपको एक समझ में आ जाएगा कि अच्छा ठीक है थोड़े टाइम तक तो मैं करूंगा ही, तो आप लिखना स्टार्ट कर दो, उस पर कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अगर आपको जब, और अगर आप कुछ सी चीज में और भी स्विच करो तो आप अपने ऑडियंस को बताओ
बताओ कि आपने क्यों किया ऐसा। जैसे मैंने जब इंजीनियरिंग से स्टार्ट किया था, मैंने कई बार स्टोरी बताई है क्यों करा है मैंने, एंड हाउ लिंक्डइन हेल्प मी डू दैट। तो वो लोगों को समझ में आता है, लोगों को समझ में आता है इट्स फाइन, करियर चेंज इज नॉट अ बिग डील। बट इससे पहले पर्सनल ब्रांडिंग एंड ऑल बिल्ड करने से पहले, please upskill, please see what skills you want to grow, get more clarity on that. Do not get lost in the person building a personal brand जहाँ पे आपको पता भी नहीं आप क्या कर रहे हो. Do not do that. Please पहले थोड़ा सा आप clarity लाओ उस पे, बात करो लोगों से, and do internships. Internships are one of the best ways to explore careers. तो Yeah, आपको अगर अच्छा लग रहा है, डिजाइन अच्छा लग रहा है, हाँ जैसे कि आप बोल रहे हैं कुछ, आपने इंटर्नशिप्स किए हैं इससे पहले, आपने भी मैंने किए हैं? इंटर्नशिप लेके मैंने फ्रीलांस 2-4 काम किए लाइक हाँ, टाइम में या फिर यू कैन से वीडियो एडिटिंग में, और लाइक मैं पॉडकास्टिंग तो कर ही रहा हूँ तो वहां से एक्सप्लोर मिल जाता है। एग्जैक्टली जैसे फ्रीलांसिंग में आप करके भी कर सकते हो, आप फ्रीलांस कर सकते हो, आप वीडियो मतलब अगर आपने कोई स्किल सीख लिया, आप उसका फ्रीलांस करियर भी देख सकते हो कि कैसे कैसे कर सकते हैं। उससे आपको काफी एक्सपोजर मिलेगा और आपको समझ में थोड़ा बहुत तो आ जाएगा कि आपका करियर किस डायरेक्शन में जाने वाला है। फिर आप उस पे लिंक्डइन पे बात करो, लोगों से बात करो, उन पे अपनी पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना स्टार्ट कर सकते हो। एकदम स्टार्टिंग से हर चीज क्लियर नहीं होती है, तो इतना ओवरवेलम होने की जरूरत नहीं है। ओवर द टाइम क्लैरिटी आती है, तो इट्स नॉट लाइक कि आपने एक बार कुछ लिख दिया तो एकदम वो पत्थर ये लकीर हो गया, मिट नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं है। सो बी बी ओके, अगर आप आज आपको डिजाइन पसंद है और कल को अगर आप थोड़ा सा शिफ्ट करके मार्केटिंग में भी जा रहे हो, so that's not a problem. There's so many people who did this and that's okay. Like I think collaboration is plays an important role while making a personal brand will with your stronger brands. So like what do you think about that? Yeah, is it कोलैबोरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कोलैबोरेशन ओवर कंपटीशन हमेशा। तो आपके फील्ड में जो भी लोग हैं आप उनसे कोलैबोरेट कर सकते हो, मतलब लाइक पोस्ट पे कोलैबोरेट कर सकते हो, आप इतने सारे वीडियोस में देख रहे हो, इंस्टाग्राम में भी दो क्रिएटर्स कोलैबोरेट कर सकते हैं, आपने अगर देखा हो वो ऑप्शन भी है। सो कोलैबोरेशन हर जगह प्रमोट हो रहा है। कोलैबोरेशन से क्या होता है कि आप उनकी ऑडियंस तक पहुंच पाते हो, वो आपकी ऑडियंस तक पहुंच पाते हैं, तो दोनों के लिए एक विन विन है। कंपटीशन करने से अच्छा है कि आप कोलैबोरेट करो, लोगों से इंस्पायर हो, उनसे सीखो आप वो क्या कर रहे हैं, और उनके साथ अगर आप कर सकते हो तो करो। दैट इज द वन ऑफ द बेस्ट वेज टू ग्रो योर नेटवर्क एज वेल। So I think collaboration over competition anytime. so like how LinkedIn plays an important role in your life? LinkedIn is like my whole like brand. I feel sometimes is based on LinkedIn because मैंने LinkedIn से start किया था, मैं वही कर रही हूँ अभी। तो LinkedIn is a very important platform. Recently I got like just graduated I guess on 11th only, yeah, from LinkedIn Creator Accelerator program. So I was selected as one of the top 200 creators as well. So I think LinkedIn has a big role in my life, especially changing my career and starting as a consultant. So definitely LinkedIn comes way like above a lot of other social media platforms in my life. तो थैंक यू सो मच दी, आपने बहुत कुछ चीजें बताई और पर्सनल ब्रांडिंग एंड लिंक्डइन के बारे में काफी कुछ बताया, कंसिस्टेंसी के बारे में बताया। तो बहुत बहुत शुक्रिया। एंड लाइक मैं आपसे कुछ एडवाइस कहना चाहूंगा कि लाइक आप कुछ आप एडवाइस करना चाहो फॉर द यूथ जो पर्सनल ब्रांड बनाना चाहते हैं, या फिर जो आपकी कुछ लर्निंग्स रही वाइल योर जर्नी ऑफ इंजीनियरिंग एज वेल एज योर पर्सनल ब्रांडिंग। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए, यहाँ पे मुझे एक मंच देने के लिए, स्पेशली अपने थॉट शेयर करने के लिए। सो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड अगर मेरी एडवाइस है तो मैं तो यही कहूंगी कि अगर आप क्लियर हो क्या करना चाह रहे हो, तो आप पर्सनल ब्रांड बनाना बिल्ड शुरू कर दो, एज अ फ्रीलांसर चाहे एज अ बिजनेस ओनर, हर चीज में आपको हेल्प करेगी। एंड इसके अलावा मेरे हिसाब से एक बहुत एडवाइस जो मैं खुद को भी हमेशा देती रहती हूँ और सबको, वो ये होगी कि खुद को कंपेयर ना करें दूसरे क्रिएटर्स से। जब हम पर्सनल ब्रांड बनाना शुरू करते हैं या ऑनलाइन लिखना शुरू करते हैं, इंस्टाग्राम में अकाउंट बनाते हैं, तो हम अपने फॉलोअर्स बहुत कंपेयर करते हैं कि किसी के इतने सारे बढ़ रहे हैं, हमारे नहीं बढ़ रहे। हाँ, भाई इतने सारा उनका लाइक्स आ रहा है, कमेंट्स आ रहे हैं, इतना मत उससे ऑब्सेस होइए। 2 years बैक आई यूज टू गेट ऑब्सेस्ड अ लॉट की इतना, अब तो मैं इतना नहीं ध्यान देती हूँ, लेकिन हाँ ओवर टाइम कभी कभी आने लगता है कि यार उसका इतना बढ़ रहा है या उसका ऐसा चल रहा है, हमारा नहीं चल पा रहा, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम। ऐसा कुछ नहीं है, एवरीबडी इज फाइटिंग अ बैटल विच यू डोंट नो अबाउट। सो it's fine, you are at a very good place in your life, and just think from there and compare. If you want to compare yourself, compare yourself with the person you were yesterday. That should be the only comparison, no nothing else, because everybody's journey is different, everybody's life looks different, लोग अलग अलग जगह से आए हैं, अब सबके privileges अलग अलग हैं। सो कंपेयर करना कहीं से भी सही बात नहीं है। अगर आप कंपेयर करोगे तो जितना भी पूरा जॉय है जर्नी का वो चला जाएगा, यू विल बी स्टक, यू विल बी ट्रैप्ड एक तरह से, तो वो मत करो। एंड दूसरी चीज है कि कभी कभी हम बहुत ओवरवेलम हो जाते हैं कि नहीं हो रहा, ऐसे चल नहीं रहा है। सो उस समय में हाँ एंड हार मान लेते हैं, ये बहुत नॉर्मल है ये होना, क्योंकि बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, कितनी सारी चीजें, कितने सारे वेबिनार्स, कितने सारे कोर्सेज, क्या क्या करे कोई, बिकॉज
24 ही घंटे हैं दिन में। हाँ। तो इस टाइम में आपको एक मेंटोर की जरूरत होती है, ये जो आपको बता सके, थोड़ा सा आपसे जर्नी में आगे और आपको गाइड कर सके। तो रीच आउट टू मी ऑन लिंक्डइन और समबडी एल्स हु कैन हेल्प यू, यू थिंक वो आप कर सकते हो, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो आगे। मतलब आप एक तरह से उस पे जो आपको गाइड कर सके ना, आप इतना ओवरवेलम ना हो, क्योंकि जर्नी बहुत ही लंबी है। एंड अगर आपके पास कोई मेंटर और गाइड होगा तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। जैसे मेरे पास भी कुछ लोग थे जिनसे मैंने बात की जब मैं कंफ्यूज थी कि मुझे क्या करना चाहिए। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इंपॉर्टेंस ऑफ अ मेंटर। एंड सेकेंड इज, please don't compare yourself to any other person. That would be my two pieces of advice. Otherwise you are good to go. Please go ahead. तो थैंक यू सो मच दी। एंड मैं अभी सभी को कहना चाहूंगा कि दी के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहां से उनको चेकआउट कर सकते हो, उनसे काफी नॉलेज ले सकते हो। पॉडकास्ट में उन्होंने काफी कुछ बताया, बट ये एक शुरुआत है और दीदी से काफी नॉलेज आपको मिल सकती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया दी। एंड इस Thank पॉडकास्ट you so much. थैंक यू सो मच दी, एंड बाय। Thank you. Thank you, Harshit. Bye. Thank you.